Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session, and additionally, I'll be supplementing the news with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So before I start, just to tell you about the daily editorial compilation, which you can buy now on Amazon. This is listed on Amazon. You can directly buy it from Amazon and you can share your feedback, right? So these are some of the feedback that was given by the student. You can share your feedback as well. I have provided a dedicated link in the description section of this video from you where you can directly buy this book. So do check it out and excel your level of preparation. Now starting with today's topic. So today is 4th of June. The first topic is NITI Aayog SDG Index 3.0. Second, panel to fix minimum wages, national floor wage. Third is CVC norms for employing retired officers. Good news coming from the CVC that they're coming with the regulations. Second last, substantial increase in the service export. And the last is fixing rural healthcare needs. So this is an editorial from the Hindu. Apart from all the discussion of the news, there would be some MCQs question at the end of this video that would be based on current affairs and is relevant for your upcoming prelims examination. So without any further ado, let's get started with the first news. And before I proceed, just to tell you, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, that is NITI Aayog SDG Index 3.0. This is a third edition of index which is being released by the NITI Aayog, India's think tank. So talking about the relevance of this news, this can help and this can be asked in the General Studies paper 2, government policies and intervention in development of various sectors, and this index in general is again very important for your prelims examination. So make sure you are thorough with all the points, states which are performing well. We'll discuss everything in detail, so make sure you read out everything, because still the examination has been extended till October, so very possible chances that these questions may have been asked in the examination. Now, according to the NITI Aayog 2020 index report has been recently released, and it shows the significant improvement in the sustainable development goal related clean energy, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ. तो तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, कोर एरियाज हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी गई है इन तीन सेक्टर्स पे, राइट. एंड द इंडेक्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय द ग्लोबल कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पे 17 SDG के जो गोल्स थे जिनके डेडलाइन 2030 तक रह गई है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करी, एंड अकॉर्डिंगली द परफॉर्मेंस हैज बीन शोन विद द SDG इंडेक्स. हाउएवर देयर हैज बीन मेजर decline in the area. कुछ areas पर decline भी देखी गई है, that include industries, innovation, infrastructure, as well as decent work and economic growth. So these sectors have not performed well. I will show you all the infographic that will help you understand how the NITI Aayog report is and what it actually want to convey. Now, omission of key indicators. So some of the points, some have been areas, some of the key indicators have been omitted. उनको remove कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है. So the key economic indicator used to measure inequality in income, expenditures पे, उसके अलावा जो weightage होती है social indicators पे on that. So what new has been added? So the percentage of women on the scheduled caste and scheduled tribe representation in the state and legislative panchayat raj institution, and the level of crime against ST, SC and communities. So these parts were mostly omitted. Now coming to the state performance, now from this slide the things become very important for you. These are some of the factual questions that you must learn. So top 5 position of the state, this is being topped by Kerala, followed by Himachal Pradesh and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand, Sikkim and Maharashtra. So these are the score which was provided by the NITI Aayog. Now the worst performer among the bottom performers include Chhattisgarh, Nagaland and Odisha, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Rajasthan and Uttar Pradesh, Assam, Jharkhand and Bihar. So these were some of the bottom 5 position states. Now I'll tell you some of the global goal-wise performance of the states if you want. I'll link down the entire PDF my video के link में.
उसके आपको पूरी SDG की जो नीति आयोग की PDF है उसके लिंक दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में. आई हैव टेकन दिस पिक्चर्स, दिस इमेजेस, दिस इन्फोग्राफिक्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो कि कल रिलीज की गई है. सो गोल 1 की अगर बात करें, नो पॉवर्टी, तमिलनाडु एंड दिल्ली हैज डन वेल. Talking about the goal 2 in zero hunger, Kerala and Chandigarh has performed well. Why I'm telling you category wise? Because UPSC can ask you anything in detail about any of the goal, right? So goal 3, good health and well-being में गुजरात और दिल्ली की performance अच्छी है. In goal 4, quality education, Kerala and Chandigarh. Again, like same, every goal is there. Talking about gender equality, Chhattisgarh, Andaman and Nicobar. Goal 6, clean and sanitation, Goa and Lakshadweep. Decent work and economic development, Himachal Pradesh and Chandigarh. For affordable and clean energy, this list is long. You can pause this video and you can check the entire states. Now coming about the other goals, that is goal 9. So you're talking about industries, innovation and infrastructures. Gujarat and Delhi are the leaders. Reduce inequality, Meghalaya and Chandigarh. Now coming to goal 11, that is sustainable cities and communications की अगर बात करें तो पंजाब and Chandigarh. Responsible for the consumptions and productions, Tripura, Jammu and Kashmir and Ladakh. These are the new union territories. Now goal 13, climate action, Odisha, Andaman and Nicobar, right? For 14th goal, that is below water, that is Odisha is performing well. Goal 15, life and land, Arunachal Pradesh and Chandigarh. And for the goal 16, peace, justice, a strong institution, Uttarakhand and Puducherry. So I will link down the PDF in the description. Do check it out and read the entire other goals which are available there. Now talking about the sector priorities for investment map. So SDG के जो priorities हैं उसमें कुछ जो top priorities है that include goal 1, no poverty, zero hunger and gender equality, right? And other SDG development are goal number 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 and 16. और मैंने आपको पहले भी बताया SDG के जितने goals हैं उनको आप याद कर लीजिए because that is very important for your general studies paper 2 as well as general studies paper 3, right? Make sure you remember all the goals which is available. Now some emergent sector, which sector is emerging, नीति आयोग ने कुछ sectors को highlight किए हैं. That include education, healthcare, renewable energy and alternative, renewable resources and alternative energy, food and beverages, financial institution or financials, sustainable environmental, technology and communications. So these are some of the emergent sector. A question can be directly asked in prelims examination that these sectors are performing well or not performing well. So it will be easy for you if you'll be thorough with the entire knowledge. Now moving ahead, that is panel to fix minimum wage, national floor wages. So good news coming from Government of India because this is a time that we need to revise the wage because the people, the liberal class who are working, they definitely need the recovery of the economy and whatever compensation can be given to them would be like with the minimum pay. So this is the right decision on the right direction. So important for general studies paper 2, functions as a responsibility of union and state. उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक है जनरल स्टडीज के पेपर 2 में लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, वहां भी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एक्सपर्ट ग्रुप जो कि प्रोवाइड करेगी टेक्निकल इनपुट्स और रिकमेंडेशंस देगी टू हाउ अ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर फॉर द मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड, राइट? So this is the second expert committee on the minimum wage formed by the government within last 2 years, right? So post COVID, this is something which is very important. The economy is recovery, we are unwinding. जो ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें जो कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक वेव 2 है, दैट इज ऑल्सो इंडियाज में केसेस अभी 1.2 के आसपास है, 1.2 लाख के आसपास है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि किसी तरह से थर्ड वेव ना आए और इकोनॉमी जो पूरी तरह से अनलॉक है वो की जा सके. एंड टू गिफ्ट द लेबरर्स, नो दिस वुड अगेन टेक अनदर टाइम फॉर 2 to 3 years, बट डेफिनेटली द रिकमेंडेशन, द प्रीवियस रिकमेंडेशन विच वॉज गिवन शुड बी इम्प्लीमेंटेड. मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस रिकमेंडेशन है वो क्या है. The expert group has been constituted with a period of 3 year time. So this group has provided, this expert committee has been provided with a time of 3 years to give their opinion.
And to arrive the wage rate, the group will look into the international best practices, जो global practices है wages पे, कोई scientific criteria, methodology for fixing the wages. So it is not abstract that they would be deciding. They have to work on the exact model that globally is being accepted. Now earlier panel recommendations की अगर बात करें, जो इससे पहले पैनल स्टैब्लिश की गई थी 2018 में, they undertake evidence based analysis to determine the methodology of national minimum wages. और यहाँ पे जो recommendations थी, they weren't accepted by the central government. तो गवर्नमेंट ने इस recommendations को accept नहीं किए थे. 375 रुपीज पर डे की बात की गई थी एंड मंथली इट वाज 9,750 rupees, right? This is per July 2018 price, which was not actually accepted by the government. Now talking about the national floor level minimum wages. So according to the new code, which is the code on wages, which is actually being enforced, तो यहाँ पे सेंटर ने ये कहा कि रिविजन की जाएगी, जहाँ पे स्टेट्स को भी रिवाइज करनी होगी अपने वेजेस पे, जो नेशनल लेवल होगी एवरेज, उससे ऊपर, उससे बिलो, उससे नीचे स्टेट्स प्राइस फिक्स नहीं कर पाएंगी. And they have suggested 176 rupees as a minimum अभी present में. So this is the national minimum floor, 176 rupees. And if you talk about the highest paying states term of the wage level, so Delhi has 538 rupees, Andaman and Nicobar 451, Karnataka 411, Lakshadweep 401, Chandigarh 376. And the lowest paying states include Nagaland, Tamil Nadu, West Bengal, Tripura and Himachal Pradesh, right? So if you're writing in essay, you can use these type of data. CVC norms for employing retired officers. It is being argued that the topmost position which is being occupied by the bureaucrats has some vested interest, and they have an inclination toward the incumbent government. So in light of that, CVC is coming with the norms that how a retired person can be re-employed in any other organization. So important for your general studies paper, two important aspects of governance: transparency and accountability. Also, this can be important for the general studies paper 4 in the case study. So recently the Central Vigilance Commission, CVC, they have defined the procurement procedures for the government organization, जहाँ पे vigilance claims जो हैं वो mandatory होंगी for any retired officer who would be working on contractual और consultancy basis के तौर पर. अगर वो contractual काम कर रहे हैं तो भी, और ये consultancy basis पे काम करेंगे तो भी उनको NOC चाहिए होगी from the Central Vigilance Commission. Now as per the CVC, absence of the uniform procedures जो कि अभी तक नहीं है, उस वजह से देखा ये गया कि बहुत सारे जो malpractices is also taking place in this country. Now some guideline by the CVC, the recent guideline, the updated guideline. तो CVC ने कहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, they would be mandatorily taking the CVC clearance, उनको NOC लेना होगा CVC से, and this is before offering the post retirement job to all India services. जितने भी all India services के लोग हैं, that include IAS, IPS, IFS, right, Indian Forest Service, और ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, जितनी भी सर्विसेज आती हैं सब लोगों पे एप्लीकेबल होगी. एंड द CVC सेड दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट ऑफर विदाउट द कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी कूल ऑफ पीरियड. तो जिससे पहले ये कूल ऑफ पीरियड कही थी, मैं आपको बताऊंगा कूल ऑफ पीरियड क्या होती है. सो उस कूल ऑफ पीरियड पे उससे पहले अलाउ की जा रही थी, जो कि एक मिसकंडक्ट है सर्विस रूल की. Now the procedures for engaging the retired government officials should be transparent and equal to the opportunity. जहाँ पे इतना willingness service एक procedures आएगी जहाँ पे retired officers को एक transparent manner से employ करने की ज़रूरत है, ताकि एक पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट विच एन इंडिविजुअल, विच एन रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियल इज गोइंग टू बी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल या कंसल्टेंसी बेसिस पे एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट होगी उस पोस्ट के लिए. उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट करनी होगी, सो दैट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. नाउ क्लियरेंस अडवाइज्ड एम्प्लॉयर, जो पहले एम्प्लॉयर होंगे वहाँ से उनको क्लियरेंस लेनी होगी, बिकॉज इफ एन और इंडिविजुअल इज ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने जहाँ पे 10 साल तक पहले काम किए हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से एक उस एम्प्लॉयर के बारे में क्लियरेंस चाहिए होगी विजिलेंस कमीशन से, राइट. और उस ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, दे वुड बी सेंडिंग देयर रिपोर्ट विद इन 15 डेज. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 21 डेज तक अपने रिपोर्ट सबमिट
नहीं करती है तो इट वुड बी डीम्ड, ये माना जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस इंडिविजुअल के लिए एनओसी दे दी है सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, राइट। Now, cooling off period क्या होती है? I have told you that. I will tell you what is cooling off period. So, in the case of retired officers taking up full or contractual assignment, एक private sector में जाने से पहले तो cooling off period होती है. That was not observed in the constituted serious that as I told you कि ये पूरे नहीं करने से misconduct में count होती है, and it is directed by the government organization to formulate and ensure the cool off period that was observed. तो basic procedures है जब भी किसी ऑल इंडिया सर्विसेज कंप्लेंट तो उसके कूल ऑफ पीरियड को देखा जाता है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड है, अकॉर्डिंगली दे वुड हैव टू एम्प्लॉय. नाउ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द सर्विस एक्सपोर्ट. So some positive aspects, some positive news in the economy that the service sector export has increased. So this is important for your general studies paper 3, Indian economy and issue related to planning, mobilization, resource growth and development. So as per the latest estimate जो Ministry of Commerce की तरफ से आई हैं, they said that India's export has grew by 6.44%. This is for the May, और जो total amount है that is $17.85 billion. अगर बात करें सर्विसेज की, सर्विस इंपोर्ट की, सो दिस ग्रू जस्ट 0.3%. तो इंपोर्ट, सर्विस के इंपोर्ट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, दैट इज $10 billion. बट इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल सर्विसेज से एक्सपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी. Now there is a comprehensive recovery in India's export in May numbers, building to the performance. Comparatively अगर अप्रैल से कंपेयर करें तो मई में परफॉर्मेंस अच्छी है. Sector-wise performance, 67% rise in the merchandise export in May. Just understand the number, understand the sequence, कि whether there is increase or decrease, right? तो 67% rise हुई है merchandise exports में. Also 8% higher than the pre-pandemic month 2019. तो 19 में जो ग्रोथ थी उससे 8% हायर ग्रोथ इस बार हुई है. Service related record 15.4% higher surplus on year basis, so that the trade surplus must be on sectoral. और अगर पेट्रोलियम, जेम्स और ज्वेलरीज की बात करें, सो यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई है, नॉट वेरी मच. नाउ मच अवेटेड जो इफेक्ट्स है पीएलआई स्कीम की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं उसकी इफेक्ट्स अभी इकोनॉमी में दिखनी बची हुई है, that is awaited and that will show its result in coming quarters. So the measures of PLI that would be considered as a medium term and it will affect the production linked scheme जो है that would be materializing into investment ground in very expedited framework. और ये जो sectors हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मोबाइल है, दिस वुड बी विजिबल ऑन नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि जो पीएलआई स्कीम्स में जितने भी इंसेंटिव्स दी जा रही हैं, सो दैट वुड हेल्प टू रिकवर द इकोनॉमी इन द लॉन्गर रन. सो दीज आर मीडियम टर्म इनिशिएटिव्स. सो लॉन्ग अवेटेड नोटिफिकेशंस फॉर द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, जो टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है जिसको ROD टेक भी कहते हैं, दिस स्कीम वुड ऑल्सो डन वेरी ईगरली. सो क्या है ये स्कीम? बेसिकली रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. तो एक नई स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की गई थी 1 जनवरी 2020 एंड इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. एक फुल्ली ऑटोमेटेड इनपुट टैक्स होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द जीएसटी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन इंडिया. एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में what is the main purpose of the remission of duties or taxes, so this is to increase the export. और ये expect की जा रही है this would adequately incentivize the exporter by reducing the duties paid and it will initiate the refund of various tax exporter as well. Now ITC, basically the input tax credit, would provide a set of tax जहाँ पे purchase of raw material, consumable goods, services that would be used for the manufacturing or services. और ये this will help in avoiding the double taxation or cascading effect on the taxes. तो क्या जो टैक्स पे जो डबल टैक्सेस है या फिर जो टैक्स के बहुत रिपरकशन है एक इंडिविजुअल पे, उसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी. Now coming to the other news, this is an editorial from the Hindu, fixing rural healthcare needs. So this is being written by Bhupendra Singh Hooda. He is a former Chief Minister of Haryana and he talks about what best can be done on the rural healthcare sectors. And he also talk about the important aspect. I'll tell you what we are going to discuss in this editorial. So under this editorial, healthcare facilities in the rural area, how it can be boosted.
और कुछ सब सेक्शन मैंने इस एडिटोरियल को कैटेगराइज किया है दैट इंक्लूड रोल ऑफ हेल्थ केयर, शॉर्ट फॉर इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स, डेथ बाय डिजीजेस, कुछ और ऐसे डिजीज हैं जिनकी वजह से इंडिया में डेथ हो रही है, एंड द बॉटम लाइन, राइट. In this editorial, some picture of Haryana was also being discussed. So I'm not discussing that Haryana part. I'm mostly considering this editorial on the national level basis. So two consecutive waves, जहाँ पे COVID-19 और Mucormycosis, also known as black fungus, they have left India shattered. पूरी तरह से economy, and even in individual businesses, small businesses, organized sector, unorganized sector, everything has shattered and the economy is performing at the worst. And during the second wave, the pandemic, rural people are struggling the most. So these are the most vulnerable people. In cities, we are recovering, but in rural India, still the cases are high. And they are struggling to get prompt and quality health care. Now talking about the role of healthcare, एक healthcare की क्या role होती है एक छोटे शहरों में. So the role of healthcare facilities in rural areas to provide regular and comprehensive healthcare needs. So उनकी जो basic ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना. If you go by World Health Organization principle, उनकी जो universal health coverage है that call for ensuring all people have access to health need services including prevention and promotion, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और पैलिएशंस, इन सारे चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट को, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए ताकि सफिशिएंट क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके, लोगों को जो ज़रूरत की सर्विसेज है वो मिले और किसी भी तरह से उनको फिनेंशियल हार्डशिप ना हो. एंड इंडिया, आई जस्ट टेल यू, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो है, जो ओपीए है हेल्थ में, वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट. सो दिस हैज़ टू ड्रास्टिकली रिड्यूस क्योंकि लोगों की इनकम कम है और जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई है. Now, shortfall in the healthcare. So the second wave of the novel coronavirus pandemic has exposed an inadequate, poor health infrastructure in the rural India. इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है बिकॉज बेसिक एम्यूनिटीज हेल्थ केयर है ही नहीं हमारे ग्रामीण शहरों में, राइट, ग्रामीण इलाकों में. नाउ द फैक्ट शैटर्ड दैट द यूनियन हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री सेट, उन्होंने सजेस्ट किया कि कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 29,337 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की ज़रूरत है in the rural India, and India has 2,743. So the shortfall of 3,594 unit is again there. So this is why one PHC होने चाहिए हर 25 villages में इंडिया में, and we have 524 community healthcare center against the requirement of 7322, right? और अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, यहाँ पे सजेशंस दी गई थी कि इंडिया हैज़ 8 हॉस्पिटल बेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ 10,000, राइट. और चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे 40 बेड है फॉर सेम नंबर. सो यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस इज देयर. एटलीस्ट वी नीड टू फुलफिल दिस गैप सो दैट जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनके लेवल पे हम आ सकें. नाउ डेथ बाय डिजीजेस अपार्ट फ्रॉम कोविड, द प्रीवियस एस्टिमेशन, इससे पहले जो डिजीजेस थी WHO के अगर मुताबिक माने, जो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं दैट इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैंसर प्रॉब्लम्स, इस वजह से 41 मिलियन लोगों की जान जाती है हर साल, एंड दैट इज अबाउट 5.8 मिलियन डेथ इन इंडिया. एंड it is not to be humanly possible to treat all of them, right, causing premature death. What we can do, we can provide the people, like जो ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिड कैटेगरी में आते हैं, जो वनरेबल की कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए हम रीचेकिंग या फिर बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल में, उनके हेल्थ चेकअप कर सकते हैं. वी कैन मॉनिटर देम, वी कैन प्रिवेंट देम. सो आई विल टेल यू व्हाट आर द prevention measures that can be taken as a bottom line. So the takeaway from the pandemic is that India need to revisit and refurbish its healthcare infrastructure in rural India. Basic amenities should be there. Even for eye surgeries, people have to travel a lot more. They have to travel to the cities to get a test or minor surgery done. So यहाँ पे ज़रूरी है जो हमारी चेन है, जो हेल्थ केयर सेंटर है, PHC हो, CHC हो, HSCs हो, इन सारे को इंटीग्रेट करने के लिए ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. एंड रूरल हेल्थ केयर कैंप इन रूरल एरिया, रेगुलर हेल्थ केयर कैंप शुड बी प्रोवाइडेड टू आइडेंटिफाई, जहाँ पे जो लोग ट्यूबरकुलोसिस में है, हाइपरटेंशन में है, डायबिटिक हैं, उनके प्रॉपर टेस्ट, एंड दे शुड बी मेक अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द हेल्थ कंडीशंस, राइट. एंड इन फैक्ट फास्ट changing health scenario, we would have one PHCs every 10 villages, जहाँ पे provisions for some bed की and minimum necessary facility should also be
provided, right? Now coming to the MCQs question of the day, before I start with the question, just to tell you the answers. So for the yesterday questions, for the first question, the correct answer here is A, and for the second question, the correct answer is C. Now coming to the today's MCQs question, which of the following has recently released COVID Performance Index? It is being released by the Harvard University, Serum Institute of India, Lowy Institute, or World Health Organization. So what you have to do, you have to write the correct answer in the comment section down below. Now moving to the second question, the fourth edition of Future Investment Initiative Forum was hosted in which among the following cities, whether it is Sweden, Laos, Riyadh, and New Delhi, right? So you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. So this was all about the daily news, editorial, and news analysis followed by the MCQs question. If you have any other concern, you can let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.